Everyone says that working in a big four is a dream for every chartered accountant, but what actually life looks once you are into the big four? In today's video, I'll tell you how the life is inside a big four of a CA. And before starting with the video, I'll brief about myself. I am CA by profession. I started my journey with KPMG, and I'm currently associated with PwC. I have cracked all the big fours twice. सो जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं दैट इज कि डज ऑल द बिग फोर पीपल वर्क 14-16 hours a day, is the salary worth the hike and worth the pressure that we face, and this is CA actually do the work from morning to night. ये तीनों ही myths I will break in the coming video. बेसिकली आप आपका वर्क कैसा रहता है, कितना प्रेशर रहता है, इट वेरी मच डिपेंड्स आप किस डोमेन में हो. ठीक है, अगर आप ऑडिटिंग में हो तो ऑडिटिंग एक बहुत ही सीजन्ड प्रोफाइल है, डोमेन है, जहाँ पे आपका जब सीजन आता है पीक ऑडिट का, तो उस वक्त आपकी टाइमलाइंस काफी एस्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, आपके वर्किंग आवर्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, राइट. इन कंपैरिजन टू टैक्सेशन थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे along the year almost similar working hours रहते हैं. Advisory it's more about कि when you are acting on a client, उस वक्त क्लाइंट की प्रायोरिटीज होते हैं, तो आपको उसको मीट करने के लिए अपने डेडलाइंस एक्सटेंड करने पड़ सकते हैं टू इंक्रीज योर वर्क आवर्स. अदरवाइज इट इज अ नॉर्मल वर्किंग आवर्स. Deals, maybe it is mergers and acquisitions. This maybe same goes as with the advisory. It depends on your own client. वो कब है? It is not about any particular month. या ना ऐसा कोई peak आता है. It is all about for both these fields. It is more about your clients and not about any particular month जहाँ पे workload increase होता है. Consulting also it goes the same way, and risk is your internal auditing. So my point here is कि it is not about which big four or कि क्या big four में हमेशा ही you have a long hours. The answer is no. It very much depends आप किस domain में हो and उस particular client की requirement कितनी urgent है. If it is urgent, so you will have to extend your timelines. Otherwise, stable working hours होते हैं. And obviously कुछ चीजें हैं जो non negotiable हैं big four में, कि आपको डेडलाइंस मीट करनी ही करनी है. ठीक है, इन अ वे इट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि डाउन द लाइन बाकी कॉर्पोरेट्स में भी यू हैव टू मीट द टाइमलाइन. इट इज जस्ट कि बिग फोर इज अ प्लेटफॉर्म जहां वो आपको ये चीज बहुत पहले सिखा देते हैं करियर में, सो इट्स गुड ऑल्सो. एंड हेवी क्लाइंट इंटरक्शन, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइंट इंटरक्शन होता है. द रीजन बीइंग बिग फोर इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दे डिलीवर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. So it is we who has to interact with the shareholders. And constant learning curve, obviously if you're investing so much time, you're working so hard, so obviously this will increase drastically. Unseasoned peaks होते हैं workload में. ऐसा नहीं है कि 365 days you are working limitless and बहुत ज़्यादा ऐसा, that is nothing, that's a misconception. The people think that you have to work too much. Yes, you have to work, you have to put in extra hours also, but there are few times to it. ऐसा नहीं है that you're working it entire year. ठीक है. So the generally morning routines, how it starts for a CA at a big four. So generally people begin between 9 to 10 a.m. सबसे पहली चीज जो इवन आई ऑल्सो डू दैट आई चेक माई ऑल माई मेल्स द मॉर्निंग में. द फर्स्ट थिंग व्हेन आई लॉग इन, आई ऑलवेज चेक माई मेल्स and I see कि किसके साथ मीटिंग है आज दिन भर में, to whom I have to meet in the office, and which all people are coming to meet me, and teams review, because कई बार होता है ना कि internal people even send the invitations on the teams. So the next thing we do is to check our teams, and we have to plan our task accordingly, and because बहुत सारी deadlines होते हैं जो शायद हमने कल meet नहीं कर पाई है, but today we have to do it because of the delivery that we have to give for these services. So we plan accordingly, and also we have to attend the daily meetings and all with our partners and shareholders. The next thing is your advisory. The next thing is your actual work, where you actually have to work. So ये मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि so your profile actually varies, the time period and the working hours that you are into. ऑडिटिंग में आपका काम जनरली रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने का, बिकॉज एज अ ऑडिट डोमेन आप फाइनेंशियल्स बना नहीं सकते हो. यू कैन नॉट गिव द अकाउंटिंग सर्विसेज सिंस यू आर ऑन ऑडिटर. आपको यू हैव टू टेस्ट द ट्रांजेक्शंस, यू हैव
टू डू डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कशंस करना है क्लाइंट्स के साथ. एडवाइजरी में आपको रिसर्च का काफी काम होता है. सो आपको रिपोर्टिंग्स देखनी है, इंडियस इम्प्लीमेंटेशन हाउ इट इज हैपनिंग, एंड अगर उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी से चैलेंजेस है, सो यू हैव टू सॉल्व दैट एज वेल. एंड क्लाइंट प्रेजेंटेशंस. Taxation में it is more about the compliances. So taxation is also very good profile. It is more about कि returns time पे submit हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, how is the GST return and how is the ITC returns and all reconciliations हम check करते हैं, correct. So इसमें तीनों में ही ये थोड़ा seasoned है. So there are periods जहाँ पे आपका spike होगा working hours, otherwise it is stable. एडवाइजरी में इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट. अगर क्लाइंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो पीक होगा, अदरवाइज इट इज स्टेबल. टैक्सेशन में जनरली स्टेबल रहता है बिकॉज यहाँ पे जनरली स्टेबल रहता है, राइट. क्लाइंट कॉल्स, बेसिकली इसमें ना आपका मेजर देयर विल बी डेज जहाँ पे आपका मेजरली देयर विल बी टाइम्स कि आपका बहुत ज्यादा टाइम कॉल्स पे जाए, because you have to understand the requirements of the shareholders. You also have to understand how that work has to be delivered completely. ठीक है, तो आपका क्लाइंट कॉल पे जनरली एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डे चला जाता है, मेजरली जाता है, ठीक है. बट once you've understood what the client want, how are you going to deliver it, then that's fine. उसके बाद you can start with your process, ठीक है. And you have to take with calls with your finance managers, controllers, CFO teams, stakeholders. Yeah. Busy season reality, I've already told you कि deadlines are there and it is incentive as well, intense as well. Working late is common but not entire year. आपको ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही काम करना है, लेट लॉन्ग आवर्स, वर्किंग आवर्स, लेट नाइट. देयर आर फ्यू टाइम्स जहाँ पे yes you will have to do it because then ultimately you are the one who is serving the best of the country. So that's perfectly fine. And weekend पे at times आपको work करना पड़ सकता है, not every weekend, correct. So this isn't the reality about every single throughout the year. Workload depends on project, client and team, as I already said, right. And what does it make worth the joining? So basically अगर आप इतना hard work कर रहे हो, so why are you doing it? What is it making you do so much of hard work? These are the 6 things that we actually crave to join a big four. So that's because of the जो learning आप शायद बहुत बाद में सीखो. Big four is one which makes you learn very quick in your life. Global exposure, no doubt. It's all the big fours are globally around the country. So client exposures बहुत strong है यहाँ पे. Brand value, no doubt. All the big fours have excellent brand value. Networking की आपकी बहुत strong हो जाती है यहाँ पे, correct. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, द वे यू कम्युनिकेट, आप जिस तरह दिन भर बात करते हो अपने क्लाइंट से एंड with the people inside your colleagues and you talk, overall personality develop आपकी बहुत speedy होती है in a big four. And better exit opportunities, the moment you have big four company and your resume, so industries are very much open to take you. So that's a good point कि big four के बाद going exiting into industry is very very easy. Challenges, I've already told you कि डेडलाइंस yes होते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई होंगे बिकॉज यू आर सर्विंग द बेस्ट ऑफ द पीपल एंड बेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स. एंड कंटिन्यूस लर्निंग तो होगी ही अपनी, नो डाउट इन दैट. frequent client communication, we will have to communicate to and fro both the ends. and work life balance peak थोड़ा सा difficult हो जाता है peak periods में, otherwise it is stable. Otherwise it's stable, but yeah, peak hours में you will have to stretch a lot. You will have to give that extra mile and to complete the workload. So yeah, it is demanding, no doubt. Before work is very demanding, उनको बहुत expectations होते हैं सबसे. But at the end of the day, it's us that will make us a very very good overall rounder person. Once we have worked in a big four, it actually curves us in a very dynamic, in a very all-rounder sort of a person,
where we can stand in front of anybody and talk like somebody who knows a lot of things and have a good knowledge base. Yeah, so it's a very good thing to start your career with. I'll recommend you to start your career with Big Four if given an opportunity to you. And should you join? Yes, absolutely yes, if the opportunity is given to you. आपकी लर्निंग भी तेज होगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स एनहांस होंगी, यू विल हैव अ ब्रांड इन योर रिज्यूमे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and exposure to large clients. So if your priority is to be a very very good all-rounder person, and it's a thumbs up, and all the very best to everyone, and thank you so much for watching the video.